Can you all hear me now? All right. So in today's session, we will start with shell scripting. Okay. So what exactly is shell scripting? Okay. So so far, whatever we have learned, right? So we have covered how we can perform different operations on a Linux machine using commands. Okay. So when you have to execute the commands, we have commands execute कर रहे हैं, so you are expected to be present on the system. Okay, so somebody has to sit and execute those commands. Okay, but when you are working in the real-time environment, so you cannot be on the system always. Okay, so for example, let me just give you a scenario. So there is an important application, okay, and this application is generating lot of data. Okay, so there is an app. It is this app has some important data. So what you want to do is you want to take a backup. Okay, you want to take backup of this data. Let's say once in every 12 hours. Okay, so what is it that you can do? So let's say if this operation, ये operation के अंदर what exact backup you are taking. Let's say there is a directory called data. In that you have list of files. So let's say whatever files have been updated, you just want to take a backup and then you want to store it somewhere else. Either it can be on the same system or it can be some it can be on some external storage device. Okay, so you take this backup and then you store it on a different system. Okay, so to perform this operation, so every 12 hours you need to have this user performing this operation, right? So instead of letting this operation be performed by the user, what you can do, you can actually automate it. ठीक है, तो ऑटोमेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं. ठीक है, तो स्क्रिप्ट के अंदर लेट्स से द कमांड दैट यू आर यूजिंग इज rsync. ठीक है, ये rsync बोल के एक कमांड है. ठीक, तो दिस इज कॉल्ड एज रिमोट सिंक. तो इसके अंदर यू विल गिव द सोर्स एंड यू विल गिव डेस्टिनेशन. तो सोर्स के अंदर जो भी नए चेंजेस हैं, दे विल बी कंटिन्यूअसली replicated. ठीक है, और यू कैन जस्ट रन अ cp command once in every 12 hours you run a cp command. ठीक है, और let's assume that you want to copy this. The application, it is not a single application server, there are multiple application servers. ठीक है, आपके पास एक सर्वर नहीं है, आपके पास मल्टीपल सर्वर्स है. तो ये सब सर्वर्स से आपको ये फाइल्स पिक करना है, एप्लीकेशन का डेटा, और एक सेंट्रलाइज सर्वर में कॉपी करना है. Then how you will do that? You will basically run this script on all the servers. ठीक है, तो इसके लिए what you will have to do is you will have to write an automation. तो automation किससे करते हैं आप? You basically create a file. ठीक है, तो ये फाइल का एक्सटेंशन क्या है? डॉट sh. जो शेल स्क्रिप्टिंग हैंगी आपकी. वाई वी आर कॉलिंग इट शेल स्क्रिप्ट? We are going to automate the tasks on a Linux machine, right? So shell is where exactly the shell is used. Shell is one of the interfaces in your Linux operating system, right? जैसा कि आपके पास Windows की मशीन है,
तो विंडोज में आप ऑटोमेशन कैसा करते हैं? So you will use something like PowerShell. ठीक है? So PowerShell script you will execute if you want to automate the tasks in Windows. You want to schedule the jobs. You want to um, run some kind of automation on multiple machines. So you will use PowerShell. Now here what you will do is you will use a shell. Shell is what is shell? Shell is basically an interface between user and the system. Okay, so you give the commands. The will shell will take the input from you and it will pass it to the kernel and the system so that it can be processed and it can give you the output. ठीक है? तो शेल के अंदर there are different types of shells. ठीक है? So the most commonly used one is bash. ठीक है? So bash is very commonly used shell. ठीक है? So you can also use corn shell. Okay? And you can use Z shell. So this is mostly used on Macs. Okay? And you will have C shell. नहीं, Python क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. It does not use shell. ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी कर सकते हो ऑटोमेट. ओके, सो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको सिंटैक्सेस आना पड़ता है, राइट? सो यू विल हैव टू लर्न, बट व्हेन यू आर यूजिंग दिस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स से यू आर अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, तो यू ऑलरेडी नो कौन सी कमांड से क्या होता, राइट? तो शेल स्क्रिप्टिंग में आप क्या करते हैं? वही सेम कमांड्स आप जो है एक टेक्स्ट फाइल में रख के यू विल जस्ट एग्जीक्यूट दैट. ठीक है? So anything can be done with the help of a programming language. Like you can use Python, you can use Ruby, you can use Perl, but it's all about the familiarity with the language. ठीक है? तो ये different shells किसके लिए create करें? तो every shell is used for a specific purpose. ठीक है? तो जैसा कि आप so Z shell is used for, so this works better on Macs. Okay, so like this you can use K shell. So K shell for some for scientific experiments, you can use K shell. So depending upon the use case, you can select one of the types of shells. But the most commonly used one is Bash. That's why people say Bash scripting. ठीक है? तो ये Bash scripting में होता क्या? So when you create a file, so file will have, let's say a file will basically have Linux commands. ठीक है? So commands जैसे कि cd command है, ls command है, mkdir command है. ठीक है? So all the commands you can use. Along with these commands, you can also write some logic. ठीक है? तो लॉजिक कब यूज होती है आपको? ओके, जब आपके पास एक से ज्यादा सिस्टम्स है या फिर आपको जो है आइटरेटिवली परफॉर्म करना है या कुछ कंडीशंस है चेक करने के, जैसा कि आपको लेट्स से यू वांट टू चेक whether a user exists or not. ठीक है? तो उसके लिए क्या करते हैं आप? mk so user add command यूज करते हैं. user add and then you give the username, but before that what you will do is, let's say the user has already been created or you don't know, so what you will do, you will check if, let's say, username exists.
Okay, or let's say if file size is greater than 50 GB, let's say you want to do some cleanup on the system. 50 GB अगर से फाइल का साइज हो गया तो देन यू वांट टू ट्रंकेट दैट. ठीक है, so like this you can perform some logical operations. ठीक है, तो लॉजिक जब अप्लाई कर रहे हैं आप तो देन यू विल यूज दोज लॉजिकल स्टेटमेंट्स, जैसा कि आपको ऑपरेटर्स है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दीज आर ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, राइट. और आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, जैसा कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है. एंड यू कैन ऑल्सो यूज वेरिएबल्स. ठीक है, सो वेरिएबल क्या है? What is a variable? So variable is, it's basically a placeholder in the memory. Okay, so you just create a variable. Let's say a equals to 10. So what will happen when you create this variable? So it holds some memory space. Okay, and it will store this value. So कब तक इसको यूज कर सकते हैं ये वैल्यू को? सो विद इन दैट प्रोग्राम, लेट्स से आप एक शेल स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं इक्वल्स टू 10. तो जब आपको ये वेरिएबल यूज करना है देन व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट यूज इको डॉलर ए. ठीक है, वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यू विल यूज डॉलर साइन. ठीक है, तो एक वेरिएबल के अंदर यू कैन स्टोर नंबर्स एंड यू कैन ऑल्सो स्टोर स्ट्रिंग्स. ओके, स्ट्रिंग मतलब लेट्स से a इक्वल्स टू हेलो, b equals to word. ठीक है, so if you do a plus b, what exactly it does? hello plus word. ठीक है, तो अगर से आपको int स्टोर करना है, so here shell scripting you don't have to define the data types. ठीक है, पर डेटा टाइप क्या है? ठीक है, आप कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर रहे वेरिएबल, दैट विल बी डिफाइंड बाय द डेटा टाइप. सो यू कैन स्टोर int. ठीक है, you can store string, you can store boolean values. Okay, you can store list. List क्या है? So you give list of values. ठीक है, list of values जैसे कि for example you are creating a variable with the name fruits. ठीक है, then you can just say apple, orange. So this will become your list. And how will you access this? Echo dollar fruits. जब यहाँ पे लिस्ट आती, you can use, तो लिस्ट में क्या होता आपका इंडेक्स क्रिएट होता, राइट. जैसा कि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता? इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट विद 0. so if you want to fetch value of fruits of 0, then it will return ठीक है, so what it will return, echo dollar of fruits of 0, it will return apple. Okay, so if you want to just fetch everything, you can just say dollar fruits. It will print everything that you have stored in this variable. अगर आपको iteratively process करना है इसको, तो then what you will do? Okay, so you will have to use a loop.
ठीक है, तो आइटरेटिवली प्रोसेस करना है। आपके पास 10 सर्वर्स की लिस्ट है, ठीक है, वो 10 सर्वर्स में आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है एंड वन एट ए टाइम। देन व्हाट यू विल डू, यू विल बेसिकली यूज अ फॉर लूप। ठीक है, so there are different types of loops. You have for loops, you have while loop, you have do while. ठीक है, so we will explore what exactly those different types of loops that are available. So in a variable we can store different types of data. So depending upon the type of the data that we are storing, the data type is already, it is set based on the type of data you are storing in the variable. ठीक है, तो few of the use cases कहाँ पे आप ये शेल स्क्रिप्टिंग यूज कर सकते हैं, जैसा कि कौन से टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट? सो एनी टास्क दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड विदाउट यूजर इंटरवेंशन। जैसा कि अभी एक एग्जांपल लिए हम लोग बैकअप्स का, सिस्टम में आपको बैकअप लेना है एक एप्लीकेशन का डेटा, और लेट्स से यूजर क्रिएट करना है, आप एक नया सर्वर सेटअप कर रहे हैं और उसके अंदर आपको सारे एप्लीकेशन के यूजर्स ऐड करना है, तो दैट कैन आल्सो बी डन यूजिंग स्क्रिप्टिंग। और लेट्स से आपको यू वांट टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम, जैसा कि एक एप्लीकेशन है, लेट्स से देयर इज अ डेटाबेस सर्वर। ठीक है, सो ये डेटाबेस सर्वर में से मेरे को डेटा साइज मालूम करना है और इंडेक्स साइजेस मालूम करना है इसके, और लॉग साइज मालूम करना है। So what I can do is I can just periodically execute a script so that I can determine whether there are any issues with my application and do I have to take any action. ठीक है, हाँ, we can put those limits, or let's say if you have to take a decision, अगर आपके पास 100 GB का disk volume attached है, so you do not want your data size to exceed 70 GB. अगर 70 GB के आगे हो गया तो आपको जो है you will run into slowness issues. ठीक है, so how do you proactively monitor that? So you can get that data using some of the scripts. So without script also you can do it. So there are monitoring observability tools that are available. ठीक है, so you can actually monitor based on your requirements. You can define the thresholds and set the alerting. But if you are not willing to spend on monitoring tools, or for example, you don't have any expertise in, you don't have enough staff to deploy this monitoring solution, then you can also do it using the shell script. Okay? So shell script can be used to automate all the tasks that you are doing manually. You can periodically execute your script or you can run them as there is a requirement. Okay, so in our company, what we do is we basically spin up new servers with every application release. Okay, so we have our application runs on like 200 servers. Okay, so with every release, so which is, so our release cycle is monthly. Okay, so har ek month we upgrade our application. So when we upgrade that application, we provision new instances. We replace the existing servers with the new servers. So then what we do is there are few important things that we want to set up on the servers. So up 200 servers में you need to have the identical configuration. ठीक है, you cannot have 200 servers with different set of configuration. अगर आपके पास different set of configuration रहेगा तो you will run into issues.
ठीक है। तो उसके लिए what you can do is whenever the server is starting, you are launching the server, you are going to execute that script so that it makes sure your application servers are in the required state or the desired state. ठीक है। तो सॉरी। हाँ, स्क्रिप्ट के अंदर लिखने के लिए। हाँ हाँ, लिख सकते हैं। सो इंडेक्स मतलब जो डेटा आप स्टोर करते हैं ना, तो डेटा रिट्रीवल के लिए इंडेक्सेस क्रिएट होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डेटा द इंडेक्सेस आर क्रिएटेड। ठीक है। सो इंडेक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग विद द डेटा विच इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ठीक है। यस, दैट इज ऑटोमेटेड। ठीक है। और इट विल आल्सो गिव यू अ प्रॉम्प्ट वेदर यू वांट टू कैंसिल इट। ठीक है। हाँ, ऑटोमेटिकली शेड्यूल्ड जॉब है वो। so there is a script running, but you also have an option of canceling it or delaying it. ठीक है। Yes, there will be some script that will be running on the system. Right. Okay, that's a good question. जनरली क्या होता, आपके पास अगर से पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है समझिए, एक सर्वर, आप पहले क्या होता था, सालों साल वही सर्वर्स पे एप्लीकेशंस अपग्रेड होते थे। तो उसमें क्या, आप जब एक ही सर्वर आप कई साल यूज कर रहे, तो आपके को जो है एक तो हार्डवेयर इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है। और जो है आपको कंटिन्यूअसली सिक्योरिटी पैचेस वगैरह अपग्रेड करना पड़ता है। राइट। तो आप जब आप नए सर्वर्स ऐड कर रहे, तो आपको सिक्योरिटी की जो है फिक्र करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप जब भी नया सर्वर लॉन्च करते तो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस के साथ लॉन्च करते। ठीक है। तो उसमें आपको ज्यादातर जो इश्यूज आते हैं सर्वर की एज की वजह से, और जनरली आप लिनक्स सर्वर्स रिबूट नहीं करते आप, जैसा कि विंडोज सर्वर्स रहते हैं, फॉर एवरी पैच इंस्टॉलेशन और समथिंग यू विल हैव टू रीबूट। लेकिन लिनक्स में नहीं रीबूट करते आप। तो समटाइम्स यू विल हैव इश्यूज बिकॉज सर्वर इज नॉट रीबूटेड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसमें क्या हो रहा है, आप क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आप रिप्लेस कर दे रहे, लेटेस्ट पैचेस के साथ, लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप ऐड कर रहे, तो ज्यादातर इश्यूज आपके वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। सो दोस देर आर नॉट मेनी कंपनीज आर डूइंग इट। तो आप सर्वर्स रिप्लेस करने का विल ओनली वर्क विद स्टेटलेस एप्लीकेशन सर्वर्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। ठीक है। स्टेटलेस एप्लीकेशन क्या है? स्टेटलेस स्टेटफुल एप्लीकेशन। तो स्टेटलेस एप्लीकेशन कैटेगरी में आपका फ्रंट एंड एप्लीकेशन आता है। सो जनरली जब आप फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाते, कुछ भी डेटा आप फ्रंट एंड सर्वर्स के ऊपर स्टोर नहीं करते। राइट। सो इट इज स्टेटलेस एप्लीकेशन। सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन रिप्लेस दिस सर्वर्स, क्योंकि डेटा कुछ भी नहीं है। आप जो है एप्लीकेशन सर्वर नया लॉन्च करके सेम कोड रन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वेयर योर डेटा विल बी स्टोर्ड, योर डेटा विल बी स्टोर्ड इन द persistence layer और योर डेटाबेस। ठीक है। तो ये database is your stateful application. So generally you don't replace your stateful application. So stateless applications you can replace anytime. Stateful applications you don't do it so frequently. आपका वेब सर्वर है,
ठीक है, nginx है, ठीक है। nginx में आप जो है एक कोड डिप्लॉय करें, तो nginx के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं होता, ठीक है। सो आप एक कॉपी कोड की जो है गिटहब रिपोजिटरी में रख के, you just create a new server, download, do a clone of the code and run that application, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल यूजर का डेटा फिर या फिर एप्लीकेशन का डेटा कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा वहां पे, दिस इज अ स्टेटलेस एप्लीकेशन। अब आप जो भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, दैट एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, तो डेटाबेस क्या हो गया आपका, स्टेटफुल एप्लीकेशन है। क्लियर? एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, सो यहाँ पे व्हेन यू आर working with the shell script, so there are some syntaxes that we will have to remember, ठीक है। तो जब आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, so you will use the variable name and then value, okay, and accessing के लिए डॉलर वेरिएबल नेम। तो प्रिंट करने के लिए क्या कमांड यूज कर रहे हैं हम लोग, echo कमांड यूज कर रहे हैं। और ये शेल स्क्रिप्ट आप एक फाइल के अंदर रख रहे हैं, फाइल will be having .sh extension, or so when you start your shell script, you basically use this bin bash or bin sh. Bin sh. So bash is basically your bash shell, and sh is your normal shell, ठीक है। So depending upon what type of script, so syntaxes will vary a little bit when you are using a shell or bash. There will be few differences in the syntax of the commands. Majority of the commands will be same, but here and there when you are processing the data, a few commands, few syntaxes will change. So what exactly this line is used for? So this will basically tell your script, tell your script to use a specific shell to process the file, ठीक है। तो bin is your basically the directory जहां पे आपकी bash की बाइनरी जहां पे लोकेटेड है, which is located in where, bin directory, ओके। बिन डायरेक्टरी में क्या स्टोर होते हैं, ऑल द बाइनरीज, राइट। सिस्टम के जो बाइनरीज है वो बाइनरी स्टोर होते हैं। तो इसको बाइनरी को एक्सेस करने के लिए आप ये नहीं भी दिए तो चलता है ये, ठीक है, क्योंकि ऑल द यूजर्स बाय डिफॉल्ट विल हैव एक्सेस टू the binaries that are stored in the slash bin. But it is a good practice. So in some of the systems, you might not have it. You might have it in a different directory. So you want, so it's a good practice to configure the interpreter. This is called a shebang. Okay, generally people call it shebang. Okay, so this first line of code that you write is called a shebang. Okay, and after that you can write your syntaxes. Let's say you want to say a equals to hello. Okay, now you want to print this. So what you can do, you can just say echo dollar a. So this will print it on the screen. So after that, so since you are creating this file, you can edit this with vi, add these two lines of code, and then you save it. Okay.
when you are saving it, save it with .sh extension. ठीक है? So by default, this the file, if it does not have execute permissions, so when you try to execute the script, it will tell you file not found or no permissions issue. So what you can do, you can basically change the permissions. You can just say chmod plus x, and you can say, let's say f1.sh, and इसके बाद आपको इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है? You can just say f1.sh. ठीक है? Dot means the file is located in the current working directory, or you are just executing this script. Okay, so like this, you can also write if statement. So for if, let's say if you have two numbers and you want to, let's say a equals to 10, b equals to 20. Now you want to do a comparison. So what you can do if, so when you are using conditional statements, the syntax for conditional statements is to write them in inside square brackets. Okay, so a is greater than b. Okay, if a equals to a is greater than b, then what you do? Just say then say echo. Okay, echo if, let's say $a is greater than $b. Okay, so like this, when you are writing if, you will also put an else condition. If अगर से true नहीं हुआ तो then you go to the else part, and then you will also need to close this if. Okay, so how will you close this if? With F5. Okay. Okay, so we will stop here. I have a meeting to attend. Okay, so from tomorrow we will do the hands-on part. So for every concept, right? So whether we are using conditions, whether we are using loops, whether we are using switch cases. So we are going to first understand the syntax, and then we will do the practice. Sorry, else मतलब आप एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, एक ट्रू कंडीशन है, अगर से आपका कंडीशन ट्रू हो रहा तो यू विल परफॉर्म सम एक्शन, कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा तो दैट विल बी योर फॉल्स, फॉल्स आपका एल्स में आ जाएगा. जैसा कि आपको ऑड नंबर या इवन नंबर प्रिंट करना है, तो you will check whether the number is divisible by 2. If the remainder is 0, it is an even number. अगर से नहीं हो रहा तो then you will say else it is an odd number, right? ठीक है. Any other questions before we end the session? All right. So we will stop here. We will continue tomorrow. Okay.